continue with the exercises of the poem. The poem is the kite that we have studied in the previous session. Okay, let's start with question 1. Take out your textbook, page number 28. Working with the text, working with the poem. Now first question is list out the action words. List out the action words in the poem. जो poem में जो भी action words use किए गए हैं उनका हमें list बनाना है. Some 2 or 3 words are given in your textbook is dive, deep and snaps. Let's write the another action words from the poem. First is climbs. Climbs means to go up. Blow. Blow means to hit. Soars means to fly. Rides means to sit on the back of something and control its movement means सवारी करना. Ride means. Falls to drop down. All these are action words in the poem. Climbs, blow, soars, rides and falls. These are the action words in the poem. Okay, that you have to write in your notebook. Now the second question. Okay. Let's start exercise 2. Question 2. Read these lines from the poem. These 2 lines are taken from the poem. Then soars like a ship with only a sail. Here what is the meaning of soars like a ship? Soars means fly high. Here the kite is compared with the ship. As the ship goes up high, with the rising and falling waves in the sea. As the sea goes up high, as the rising and falling waves in the sea, the kite also fly up high in the sky. So in this line, the kite is compared to a ship with sail. Now this is called a simile. Now we have a question that what is the meaning of the word simile? Okay, let's understand what is simile. Simile is one type of figure of speech. Now figure of speech also you have a new word for you, right? So first of all understand what is a figure of speech and then we will understand what is simile. Okay? Okay, now what is figure of speech? Here we show that in the 2 lines the figure of speech simile is used. The kite is compared with the ship, right? Now figure of speech is words or phrases that makes our language beautiful, effective and impressive, known as figure of speech. Figure of speech क्या करता है कि जो हमारी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, उसको ब्यूटीफुल बनाता है, इफेक्टिव बनाता है और इम्प्रेसिव बनाता है, उसे फिगर ऑफ स्पीच कहा जाता है. उसमें पहले वैसे तो कई फिगर ऑफ स्पीच है पर यहाँ पे हम आज सिमिले के बारे में डिस्कस करेंगे और वी डिस्कस मोर details about figure of speech in our grammar session part. Okay, but here today we will discuss about simile. It is also one type of figure of speech. It means उपमा. कोई किसी के जैसा है, ऐसे कंपेयर करना है हमें. यहाँ पे comparison is made between 2 objects. In this figure of speech, the comparison is made between 2 objects. It's like he fought like a lion. वो लायन के जैसे उसने लड़ाई की. ये जो है ही कोई भी पर्सन है उसकी जो कंपैरिजन किसके साथ की गई है? लायन के साथ. ऐसे भी बोल सकते हैं कि ही फॉट ब्रेवली, राइट? तो भी वो सिंपल सेंटेंस हो जाएगा. बट अगर अगर यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ कि ही फॉट ब्रेवली, ये एक सिंपल सेंटेंस है कि उसने वो बहादुरी पूर्वक लड़ा. ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया. पर हमें उस सेंटेंस को मोर इफेक्टिव बनाना है तो हमने क्या लिखा यहाँ पे? ही फॉट लाइक अ लायन. उसकी कंपैरिजन किसके साथ की? उसकी बहादुरी की कंपैरिजन किसके साथ की?
लायन के साथ की, तो ये सेंटेंस मोर इफेक्टिव बन गया। तो इसे क्या कहेंगे? सिमिली। इसको किसकी उपमा दी गई? लायन की उपमा दी गई कि वो लायन के जैसे लड़ा, राइट? सो इन दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस we have to use like or as. In the sentence where like and as is used, it is called simile, right? Okay, look at in your textbook. The movement of tailless kite compared to a ship with a sail, and this is called simile. Can you suggest what or who is following the action may be compared to? Here in your textbook there are some sentences given with blanks, right? He runs like blank. He runs like blank. उसकी वो जो दौड़ता है उसको किसी के साथ कंपेयर करना है हमें, तो आप क्या वर्ड लिखोगे? He runs like wind. वो हवा के जैसे दौड़ता है, जैसे हवा चलती है तो वो हवा के जैसे दौड़ता है, तो he runs like wind. You can write the answer. You have to write all these in your notebook. Okay, that we will solve the sentences from your textbook. That is, he runs like, we have to compare with another word that we will compare with wind. He runs like wind. Okay, now second, he eats like blank. वो किसके जैसे खाता है, तो हम किसी के भी साथ कंपेयर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखती हूँ he eats like a pig. Okay, you can write another word also for the comparison. Okay, she sings like blank. यहाँ पे मैं लिखती हूँ she sings like, वो किसके जैसा गाती है, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि nightingale. You can write she sings like Lata Mangeshkar, right? You can also write this. It shines like blank. It shines like, जैसे स्काई में जैसे स्टार्स कैसे शाइनिंग करते हैं, तो हम उसके स्टार्स के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं. It shines like stars, right? Okay, or a star. It shines like a star. Okay, next sentence is it flies like, F-L-I, it flies like, जैसे बर्ड्स होते हैं जो स्काई में फ्लाई करते हैं, तो इट फ्लाइज लाइक अ बर्ड, राइट? तो जब भी कोई टू थिंग्स एक दूसरे के साथ कंपेयर की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है? सिमिली. वी गेट मोर डिटेल्स इन द ग्रामर सेशन विद अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच. ओके, लेट्स एंड दिस सेशन हियर. Okay, thank you.